Hello everyone, I'm Anu. Today we'll discuss the importance of water in our life and we'll read the chapter Water, O Water of class 3 E.V.S. Okay students, so first of all, just look at the picture. Can you identify what is this? Yes? Yes, this is our earth. Okay, and do you know that our Earth is called a blue planet? And do you know why do our Earth called a blue planet? Yes, our Earth is called a blue planet because of the existence of water on it. आपको पता है सिर्फ अर्थ पे ही पानी है, हो सकता है किसी और प्लैनेट पे भी पानी हो, बट अर्थ पे बिकॉज वाटर एंड ऑक्सीजन इज देयर, दैट्स व्हाई ओनली लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. और आपको पता है कि हमारी अर्थ का 70% जो एरिया है वो पानी से बना है. On the earth there is 70% of water and 30% of the land. So about 70% of the earth is covered with water, and that 70%, out of that 70% water, only 2.5 is suitable for drinking. केवल 2.5% जो पानी है सिर्फ वो ही पीने के लायक है. बाकी का जो 97.5% जो वाटर है वो कहाँ पे है? डू यू नो वेयर इज इट? इट इज इन द ओशंस और इन द सीज. और वो पानी तो पीने के लायक होता है क्या? नो, बिकॉज दैट वाटर इज सॉल्टी, है ना, वो सॉल्टी होता है पानी. And that's why sea water is very salty, so it is not fit for drinking. Okay, अब हमारे पास जो पीने के लायक 2.5% पानी है वो कहाँ पे है? That is found in rivers, ponds, right? And lake, waterfall, then tube wells, tap. This is how water reaches to us. Then canal and well. We can drink water from these areas only, not from the sea, because sea water is very salty. Okay. And how does we store water? Tanks, hot springs, sea, everywhere water is there. This is where water is found. Okay. Now, how does it reaches to us? Pumps, wells, tube wells. These all are where we can find water. And this is how water reaches to our house. You know how? With the help of pumps, we store water in our water tank, and then we get water from the taps in our houses. Okay. Now, do you know why do we need water? Is water important for us? Where do we use water? So you will say, students, that there are so many things that we cannot do without water, and water is very important for us because we can live only because of the existence of water, and we cannot live without water. So let's see what are the things, what are the uses of water. We drink water, we bathe, we brush, we cook, we grow plants, we wash clothes, and there are so many household work that we cannot do without water. So water is very essential for humans as well as animals as well as plants. Everybody needs water to grow and live. Like you can see, because in the fields water is very important, because to grow crop water is essential thing.
And without the plants, we also cannot survive because we get so many things from plants. So many eatables from plants, right? So we depend on plants, and plants cannot grow without water. So water is very essential for all of us. All right. Now tell me one thing. Have you seen water? All of us have seen water. We have drank it so many times. Even while we are, you are listening this video and you're watching this video, you may feel thirsty and you may drink water. Even I am feeling thirsty and I can also drink water. So water is very important for us, and we all have seen water. Can you tell me which color water has? Yes? Okay, so water has no shape, no taste and no color. Right? Water का, पानी का कोई color ही नहीं होता है. It is transparent. You can see, right? It's transparent and it has no shape, and it takes the shape of the vessel you pour it into. है ना? आप जिस भी चीज में उसको डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है. वाटर का अपना कोई शेप नहीं होता, ना ही वाटर का कोई टेस्ट होता है. सॉल्टी या स्वीट ऐसा कोई, या सॉर, ऐसा कोई टेस्ट वाटर का होता नहीं है. सो वाटर इज टेस्टलेस. It has no shape and it has no color. Okay. Then, now we'll discuss about the different forms of water. When we see water, it is in liquid form, right? And when we boil water, okay, what do you see? You will see that water vapors, right? You will see water vapors coming out of the vessel. You can see. So these water vapors are the gaseous form of water, right? And then, when we store water in an ice tray and keep it in the refrigerator, what we find? We can find that after some time, that water will become ice. So ice is there are three forms of water: ice, water and water vapors. And what do we call these forms? These are solid. Ice is the solid form of water, and the normal water, it is liquid form, and the water vapors is the gaseous form of water, right? So different forms of water are solid, liquid and gaseous. Now students, let's discuss about water cycle also. Do you know what water cycle is? Water keeps on moving in the nature, in the atmosphere. And this is how it makes a cycle. We call it water cycle. When water is there, what are the different phases? Because of the sun rays, the water of seas and oceans get evaporated. ठीक है, वो भाप बनके जो सीज का और ओशन का पानी होता है, वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, उसमें वाटर वेपर्स बनते हैं और वो जो भाप के रूप में पानी ऊपर चले जाता है. नाउ दैट वाटर वेपर्स दे फॉर्म क्लाउड्स. वो क्लाउड्स बनाते हैं. हाँ, और जब क्लाउड्स जो होते हैं वो ठंडे एरिया में जाते हैं तो वहां पे जो वाटर वेपर्स हैं दे कन्वर्ट इनटू टाइनी ड्रॉप्स. छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड और जब वो बूंदे इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उनको नहीं पकड़ के रख पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, देन दोज ड्रॉप्स दे फॉल as raindrops, right? And this process is called precipitation, right? And इसके बाद precipitation के बाद क्या होता है? अगेन जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो फिर से रिवर्स के थ्रू या फिर जमीन के अंदर चला जाता है, या रिवर्स के थ्रू वो ओशन में पहुंच जाता है. तो जहां से पानी इवेपोरेट होना शुरू हुआ था, अल्टीमेटली पानी वहीं पे पहुंच जाता है. और इसी तरह से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है. अगेन जो पानी ओशंस में जाता है वहां से इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है.
और उसके बाद अगेन पानी फिर से जमीन के अंदर चला जाता है या फिर रिवर्स के थ्रू ओशन में चला जाता है. एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रनिंग. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. Right? So there were so many things here in this WaterO'Water. Now let's see the text, the textbook chapter. Students, in your textbook, here is a poem on water. Okay, what is it? I'll wash my face with water, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We all are alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what says my Nani. The river flows, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. This poem is by Shri Prasad. Okay, students. So इस poem में आपको क्या बताया है कि पानी हमारे लिए कितना important है. हम अपना फेस वॉश करते हैं, हम अपनी प्यास बुझाते हैं. वी क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर एंड वी ऑल आर अलाइव. हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जी रहे हैं. देयर इज लाइफ बिकॉज ऑफ वाटर ओनली. एंड वाटर है, और वाटर बहुत सालों से, बहुत एजेस से, स्टोन एज में भी वाटर था, आयरन एज में भी वाटर था, बहुत एजेस से वाटर जो है वो हमारे साथ है. और इसकी इतनी सारी स्टोरीज हैं कि अगर हम लिखने बैठे तो बहुत सारी पेजेस फिल हो जाएंगे. कहीं पर ये ड्यू है, ड्यू इज ऑल्सो, ओस की जो बूंद होती है दैट इज ऑल्सो वाटर. हाँ, कहीं पर ये स्नो है, बर्फ की तरह जो जमा हुआ है एंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में, वो भी क्या है, दैट इज वाटर. ओके, एंड द रिवर फ्लोज, वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, और वाटर्स की काफी सारी फॉर्म्स हैं. अभी हमने की ना, दैट वाटर हैज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स. Yes, the river flow, the waterfalls sing. Rivers में पानी बहता है, waterfalls में से पानी गिरता है. Water swells in lakes and springs. Lakes में और springs में पानी बहता रहता है. Life on earth it has brought. और earth पे life कौन लाया है? Only water. Watered fields and life they got. क्योंकि fields को water मिलती है और उसी से हमारी life चलती है. बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, बट जब कभी बहुत ज्यादा पानी गिरता है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स. तो बहुत ही बड़ा मिसफॉर्च्यून आता है, बहुत तबाही फैल जाती है चारों तरफ, बहुत नुकसान होता है अगर वाटर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाए और फ्लड आ जाए तो. राइट, सो वी शुड सेव वाटर because water is a God gift, it's a nature's gift to us, and we should preserve it, we should save it, and we should use it wisely. Right, students? Yes. Now let's see the textbook exercises. Do you know any poem or song on water? Recite them in the class. So students, you can find out any poem or the song on water. Like, I got this one. Water washes over my hand, water slips away like sand. Water trickles down a river, water slides just like a slither. Water is patient and knows when to wait. Water doesn't mind if it shows up late. So you can write any poem, student. Now, second is, which are the places mentioned in the poem where we find water? Okay, you have just read that poem. Okay, so what are the places where we find water? So following places are mentioned in the poem where we find water: river, waterfall, lakes and springs. Next is, name any 4 activities which you can do without water. What are the activities that you can do without water? So, speaking,
walking, reading, and playing. These activities we can do without water. Now, you cannot do without water. And what are the activities you cannot do without water? Eating food, washing utensils, bathing, and washing clothes. Along with that, there are so many other activities also that we cannot do without water, like swimming, right? Like growing a crop or plant, huh? And many more. You can write any one. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. Now यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज बताई जाएंगी और आपने बताना है कि किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पानी लगेगा. ओके, सो द एक्टिविटीज आर टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स और टू नीड द डॉग. अब आप बताइए सबसे ज्यादा पानी किस एक्टिविटी में लगेगा? Yes, number 1 is to water the fields. Number 2 is to clean the house. Number 3 is to bath. Number 4 is to drink. And number 5 is to knead the dough. Okay, सबसे कम पानी इन एक्टिविटीज में किस में लगेगा? आटा गूंदने के लिए, to knead the dough. Have you seen, now next is, have you seen hot water coming out of the ground? Where? आपने कभी सुना है कि पानी जमीन से, अर्थ से गर्म पानी निकल रहा हो? वेल, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे जमीन से गर्म पानी निकलता है, हॉट स्प्रिंग्स जहां से निकलती हैं. और इंडिया में भी हरियाणा में सूरज कुंड है जहां से जमीन में से हॉट वाटर निकलता है. Okay. Does any river flow through your village or city? If yes, write its name. क्या आपके एरिया में कोई रिवर बहती है? तो आप उसका नाम बताइए. जैसे द रिवर यमुना पास थ्रू दिल्ली. इस तरह से आप जहां पे रहते हैं वहां पे कौन सी रिवर बहती है? यू हैव टू राइट डाउन द नेम. नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. There are so many rivers in India, students, and you can write their names like Yamuna, Ganga, Godavari, Satluj, Chenab, Saraswati, Mahanadi, Brahmaputra, etc. Okay, you can write any river's name. Now next, at home, where do you get drinking water from? अब आपको घरों में पानी कहाँ से आता? So at home water comes from pipeline. तो हमारे घरों में जो वाटर की पाइपलाइन होती है वहां से हमें पानी मिलता है. ठीक है. Then do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? Well, no. In towns water is supplied to home, but in villages water is to be brought from distant places. है ना, क्योंकि जो गांव वगैरह होते हैं वहां पे पानी दूर दूर से लाती हैं लेडीज जो होती हैं, है ना. बट यहाँ पे शहरों में, सिटीज में, टाउन्स में तो क्या होता है, हमारे घरों तक पानी आता है पाइपलाइंस के थ्रू. नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? वेल, वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ वाटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल. राइट. नेक्स्ट, now take a look at the picture. If we fill them with water, okay, now you know there are so many vessels are given in this picture. You can see there is one bucket, then one jar is there, then one can is there, then some pots are there, right? Jug is there, ek chota sa lota is also there, then you know, banti. There are so many vessels here. So which will contain the least water? वो कहता है कि अगर आप इनमें पानी भर दो तो आप बताइए कि सबसे छोटा, सबसे कम पानी किस वेसल में आएगा. So you can see that tumbler, उसमें सबसे कम पानी आएगा.
विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, बकेट में आएगा. एंड हाउ कुड यू टेल, बिकॉज टम्बलर इज स्मॉलर इन साइज देन बकेट, देयरफॉर इट कंटेन्स द लीस्ट वाटर. क्योंकि टम्बलर साइज में छोटा है इसलिए उसमें कम पानी आएगा, बकेट साइज में बड़ी है तो उसमें ज्यादा पानी आएगा. नेक्स्ट, नाउ इन योर टेक्स्ट बुक दिस इज Chutki is confused. Now let's see why Chutki is confused. Hiren and Chutki were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers. But Chutki wanted to drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into a glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, "Uncle, you have given me less panna. What do you feel? What do you feel? Did Chutki's glass tumbler have less panna?" Well, यहाँ पे देखिए हीरेन और चुटकी जो है उनको बहुत प्यास लग रही है, तो उनके अंकल उनको मैंगो जूस या मैंगो पन्ना देते हैं, और जो चुटकी को है वो उसको ग्लास में ही पीना है. अब तो उसके अंकल ने क्या किया, उन्होंने ग्लास के अंदर जो पन्ना था उसको एक दूसरे टम्बलर में डाल दिया. अब उस चुटकी बहुत नाराज है कि उसको थोड़ा पन्ना दिया अंकल ने, उसको कम दिया और उसके ब्रदर हीरेन को ज्यादा दिया. तो आप देखिए वो पूरा ग्लास उन्होंने जब टम्बलर में डाल दिया है, दूसरे ग्लास टम्बलर में डाला है, तो आपको क्या लगता है, क्या उसको कम पन्ना दिया गया है? नो, Chutki's glass tumbler did not have less panna because it is wider in size, right? पन्ना उसके अंदर उतना ही है, बट बिकॉज द ग्लास इज वाइडर उसको ऐसे लग रहा है कि वो उसके अंदर थोड़ा पन्ना है. ठीक है, एज जैसे मैंने आपको बताया कि पानी का कोई भी शेप नहीं होती, वो जिस भी वेसल में आप डालोगे उस वेसल की शेप ले लेता है. सो चुटकी ग्लास डिड नॉट हैव लेस, उसके में बिल्कुल भी कम पन्ना नहीं है, उसको उतना ही इक्वल मिला है. Now the next is circle the places where you find water. अब ये जो आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, यहाँ पे आपने उन प्लेसेस को सर्कल करना है जहां पे आपको पानी मिलता है. Like one is done for you, waterfall. बाकी आप you can circle like lake, sea, well, rain, pond, tap. Okay, you can circle the places where you find water. Next, in every row underline one that is different from the other. Also tell how it is different. अब आप देखिए फर्स्ट लाइन में रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, इनमें से कौन सा जो चीज है, कौन सी चीज इज ऑड वन आउट? यू हैव टू सर्कल और यू हैव टू अंडरलाइन द ऑड वन आउट. अब देखिए रिवर, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग, ये तो सब सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, बट माउंटेन क्या है? माउंटेन तो माउंटेन है, इट इज देयर इज नो वाटर, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. सो माउंटेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. नाउ नंबर 2 इज bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading dough. Which one is different? Yes, combing hair is different. Like combing hair does not require water. क्योंकि बेदिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स में, स्विमिंग में, नीडिंग डॉ में, इन सब में पानी चाहिए, बट कॉम्बिंग हेयर के लिए पानी नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल. अब देखो फिश, डक और क्रोकोडाइल तो पानी में रहते हैं, बट मंकी लिव्स ऑन अ ट्री. यस, सो मंकी इज ऑड वन आउट. मंकी लिव्स ऑन ट्री. So this is how you have to underline the odd one out. Now students, this was the lesson, and in this lesson what we have learned, let's summarize. Water is important for all living things. There are 3 forms of water: ice, water and water vapor. We use water for drinking, bathing, cleaning, cooking and irrigating the crops. Right? And the natural cycle of water in which it changes from one form to another is called water cycle. Right, student?
So at the end, I would like to say that we should save water. We should not waste water because water is very precious for us and we cannot live without water. So we should use it wisely, right? And this is your home assignment, students. Write a slogan on save water. Okay. So thank you so much for watching the video. Stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning. And do like and subscribe my channel, students, for more updates. Okay. Thank you.